Hi friends, Multi-Info once again welcomes you. Today we will talk about Age of Chaucer. Age of Chaucer is considered from 1340 to 1400. First point, Geoffrey Chaucer was born between 1340 to 1343 under the reign of Edward III. ये क्लियर नहीं है कि जोफ्री चौसर का जन्म 1340 में हुआ था या 1343 में हुआ था या इसके बीच में हुआ था, लेकिन अधिकांश स्कॉलर का मानना है कि जोफ्री चौसर का जन्म 1343 एडी में हुआ था। 100-year War was continued between France and England from 1337 AD to 1453 AD, in which Geoffrey Chaucer also participated in it. It was continued 116 years. 100-year वार जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में चल रहा था वो भी 116 साल तक चला। उसमें जोफ्री चौसर ने भी भाग लिया था। मोस्ट बैटल वर ओन बाय फ्रांस बट ओनली 3 बैटल्स वेयर ओन बाय इंग्लैंड। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो 100-year वार हुआ उसमें से अधिकांश युद्ध फ्रांस के द्वारा जीते गए और कुछ ही युद्ध इंग्लैंड के द्वारा जीते गए, जिनमें से जो मेन इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं जो इंग्लैंड के द्वारा जीते गए वो हैं बैटल ऑफ क्रीसे दैट वाज फाट इन 1346 AD and owned by England. Second battle was Battle of Poitiers. It was fought in 1356 AD. And third battle was Battle of Agincourt. It was fought in 1415 AD. Great Plague or Black Death occurred in 1348, 1361 and 1369 by Black Rats. इंग्लैंड में महामारी फैली जो 1348 में आई, फिर 1361 में, फिर 1369 में। इनमें इंग्लैंड की यूरोप की 1/3 मीन्स 33% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वाज डाइड ड्यू टू ग्रेट प्लेग और ब्लैक डेथ that was spread by black rats. People started questioning about the power of God. ग्रेट प्लेग के बाद में लोगों का विश्वास गॉड के ऊपर से उठने लगा, क्योंकि उस प्लेग में, उस महामारी में तीनों प्रकार के लोग या तीनों क्लास के लोग, चाहे वो क्लर्जी हो, नोबल्टी हो या कमनर हो, सभी की डेथ होने लगी। तो लोगों का विश्वास गॉड के ऊपर से उठने लगा, क्योंकि जो क्लर्जी होते थे वो आम लोगों से पैसा लेते थे उनके पाप को क्षमा करने के लिए, मीन्स टू गिव पार्डन। लोग पैसा देते थे अपने पाप को क्षमा करने के लिए, फिर भी वो ग्रेट प्लेग या ब्लैक डेथ की चपेट में आते रहे। तो इसलिए लोगों का विश्वास गॉड से उठता गया। नेक्स्ट पॉइंट इज रिचर्ड सेकंड who was the grandson of Edward III ascended the throne in 1373. Peasant revolt was launched across large part of England by यार्ड टाइलर in 1381. रिचर्ड सेकंड के आने के बाद ट्रेजरी मीन्स खजाना इंग्लैंड का खाली पड़ा मिला, तो रिचर्ड सेकंड ने खजाने की भरपाई करने के लिए आम लोगों पर टैक्स को इम्पोज कर दिया, मीन्स एक्स्ट्रा टैक्स इम्पोज कर दिया, जिससे वहाँ की जनता या पब्लिक स्पेशली पीजेंट क्लास ज़्यादा परेशान हो गया और वो राजा के विरुद्ध विद्रोह उठा दिया, विद्रोह करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट इज हेनरी फोर्थ बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1399 AD. Hence Chaucer lived under the rule of 3 kings, Edward III, Richard II and Henry IV. जोफ्री चौसर ने 3 शासक के अंदर में अपनी राइटिंग्स को लिखा। वो रूलर हैं एडवर्ड III, रिचर्ड II and Henry IV. Chaucer died in 1400 AD. Next point that is very important, the age of anonymity passed away.
बिफोर द एज ऑफ चौसर मीन्स एज ऑफ चौसर के पहले राइटर्स, ऑथर या पोएट अपनी राइटिंग में अपना नाम जोड़ना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो डरते थे कि रूलर को, शासक को या किंग को ये राइटिंग पसंद आए या ना आए, तो पनिशमेंट से बचने के लिए अपने नाम को शो नहीं करते थे। लेकिन एज ऑफ चौसर में जितने भी राइटर्स या पोएट या ऑथर होते थे, वो अपनी राइटिंग के साथ अपना नाम भी इंक्लूड करना शुरू कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट इज 5 ट्रांजिशन ड्यूरिंग एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर के दौरान इंग्लैंड में या इंग्लिश लिटरेचर में 5 बड़े इम्पोर्टेंट परिवर्तन हुए। पहला जो ट्रांजिशन था मीन्स परिवर्तन था या चेंज था, प्रोज टू पोइट्री। प्रोज को अब कम इम्पोर्टेंस देने लगे और पोइट्री को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे। दूसरा जो चेंज हुई वो डिस्क्रिप्टिव लिटरेचर टू नैरेटिव लिटरेचर। बिफोर एज ऑफ चौसर डिस्क्रिप्टिव लिटरेचर और डोमिनेंट, बट ड्यूरिंग द एज ऑफ चौसर नैरेटिव लिटरेचर बिकेम फेमस। डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव लिटरेचर का मतलब पहले किसी के इंट्रोडक्शन देने के लिए पोएट्स, राइटर्स और ऑथर किसी का इंट्रोडक्शन 3 से 4 हज़ार लाइन में इंट्रोड्यूस किया करते थे, लेकिन एज ऑफ चौसर के दौरान उसी इंट्रोडक्शन को 3 से 4 या 6 लाइन में इंक्लूड कर दिया करते थे। जो थर्ड परिवर्तन हुआ वो आइडियलिस्टिक टू रियलिस्टिक। एज ऑफ चौसर के दौरान पोएट्स, ऑथर रियलिज्म पर विश्वास करने लगे। वो समाज में जो रियलिस्टिक या रियलिज्म था उसको दर्शाने लगे। इसके पहले जितने भी पोएट होते थे वो आइडियलिस्टिक पर बात करते थे, आइडियोलॉजी की बात करते थे। फोर्थ चेंजमेंट, स्टार्टिंग ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। पहले लैटिन, उसके बाद फ्रांस, लेकिन अब क्या हुआ, लैंग्वेज को स्टैंडर्ड कर दिया गया, ईस्ट मिडलैंड को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। और फिफ्थ पॉइंट है लैटिन प्लस फ्रेंच मिला के इंग्लिश लैंग्वेज को जनरेट किया गया, डोमिनेंट लैंग्वेज इंग्लिश को बना दिया गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स, ऑथर्स एंड पोएट्स and their writings. First of all, we will talk about Sir John Mandeville, who was born 1300 and died in 1371. Sir John Mandeville was a traveler who wrote The Travel of Sir John Mandeville. The Travel of Sir John Mandeville was a memoir written in French language. It was later translated into many languages. Next writer are poets. John Barber, who was born 1320 and died in 1395. John Barber was a Scottish poet. He wrote The Brush. The Brush, also known as The Bruce, is a long narrative poem in early Scots of just under 14,000 octosyllabic lines, which give a historical and chivalric accounts of the actions of Robert the Bruce and Sir James Douglas in the Scottish War of Independence. In the ब्रूस में स्कॉटिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ा जा रहा था, उसमें रॉबर्ट द ब्रूस और सर जेम्स डगलस की हीरोइक एक्शन को दिखाया गया है। नेक्स्ट राइटर is John Wycliffe, who was born 1328 and died in 1384. John Wycliffe was a reformer, a theologist who started Lollard movement. So, Lollard movement was started by John Wycliffe. John Wycliffe was the first person who translated Bible from Latin to English. So, his main contribution was translation of Bible from Latin to English.
Next, poet John Gower, who was born 1330 and died in 1408. John Gower was an English poet, a contemporary of William Langland and the Pearl poet, and a personal friend of Geoffrey Chaucer. He criticized social evils of the society. जॉन गौर विलियम लैंगलैंड और जोफ्री चौसर के कंटेम्पोररी थे, समकालीन थे और एक क्लोज फ्रेंड थे जोफ्री चौसर के। जॉन गॉवर ने समाज में व्याप्त बुराइयों को क्रिटिसाइज किया अपनी राइटिंग में। उनकी जो राइटिंग्स हैं वह हैं ओक्स क्लेमेंटिस, दैट वाज रिटन इन लैटिन। नेक्स्ट वर्क इज कन्फेसियो मेंटिस, रिटन इन इंग्लिश। नेक्स्ट वर्क इन प्रेज ऑफ पीस, also written in English. Next, Speculum Meditatis, written in French. Mirror del Homme, also written in French. So friends, these 5 writings are related to John Gower. Now we will talk about William Langland, who is famous for Piers Plowman and was born in 1332 and died in 1486. His famous work Piers Plowman is very famous. We will discuss about a synopsis of this writing. Piers Plowman, its second name is Bicio Blemy de Port Plowman, is an allegorical narrative poem. It is written in unrhymed alliterative verse divided into sections. Friends, Piers Plowman is divided into main 3 sections. Is called passages that deals with the condition of the society, especially about the peasants. Piers Plowman में समाज में जो पीजेंट की परेशानियां थी उसको दिखाया गया है और पायर्स प्लोमैन का जो प्रोटोगनिस्ट है वो पायर्स एक प्लोमैन है। जोफ्री चौसर, नेक्स्ट राइटर इज जोफ्री चौसर, हु इज ए इम्पोर्टेंट राइटर ऑफ दिस एज। जोफ्री चौसर was born 1340 and died in 1400, but it is not confirmed that Geoffrey Chaucer was born in 1340 or 41 or 42 or 43, but most scholars consider that Geoffrey Chaucer was born in 1343. Geoffrey Chaucer was an English poet, author, a traveler, businessman, and also a courtier. Widely considered the greatest English poet of the Middle Age, he is best known for the many titles such as Father of English Literature, Father of English Poetry, Father of English Language, and the Morning Star of Renaissance. Chaucer's main important writing was Canterbury Tales. We will discuss in the after few minutes. So, lifespan of literature of Geoffrey Chaucer can be divided into 3 parts or 3 phases. First phase was French phase that was lasted until 1372. It was continued about 30 years. During the first phase, means French phase, Geoffrey Chaucer wrote 2 main important works. First work was Roman de la Rose. It was written in octasyllabic couplet. And the second book, that is very important, was the Book of Duchess. The Book of Duchess is also known as the Death of Blanche. It is the first major work. ये जोफ्री चौसर का पहला मुख्य वर्क था इंग्लिश में। इट इज एन एलिजी ऑन ब्लांसे ऑफ लैंकेस्टर हु डाइड इन 1368 and the Book of Duchess is written in octasyllabic couplet.
Next phase is Italian phase. That was continued from 1372 to 1384, means about 12 years. Chaucer went to Italy because he had a royal connection with John of Gaunt. जेफरी चौसर रॉयल कनेक्शन रखते थे, किससे रखते थे? जॉन ऑफ गॉन्ट से. ही वेंट टू इटली एंड met Petrarch, Dante, Boccaccio. From Petrarch, Dante, Boccaccio, he learnt many things. His wife was Philippa Wright. The name of Chaucer's wife was Philippa Wright, who was the sister of John of Gaunt's third wife. In Italian phase, first important writing of Chaucer was Parliament of Fowls. Parliament of Fowls is also called the Parliament of Birds, means Parliament of Birds, or the Assembly of Fowls, means Assembly of Fowls. Parliament of Fowls has many subtitles. It is a poem made up of around 700 lines. Parliament of Fowls में लगभग 700 लाइन इंक्लूड हैं. The poem is in the form of dream vision in rhyme royal stanza, written in rhyme royal stanza. Friends, it is important point that rhyme royal stanza was invented, or we can say in other words, it was discovered by Geoffrey Chaucer. Rhyme royal stanza is written in 7 lines. That's rhyme scheme is AB AB BCC. It contains one of the earliest reference to the idea that Saint Valentine's Day is a special day. The story deals with the female white eagle. पार्लियामेंट ऑफ हाउल्स व्हाइट ईगल्स की एक स्टोरी को डील करता है. whom all birds want to marry with white eagle, जिसमें तमाम प्रकार की जो बर्ड्स होती हैं वो वाइट ईगल से मैरी करना चाहती हैं. और मैरी करने का तरीका क्या अपनाते हैं? प्रेजिंग एंड शोइंग इज इट्स सुपरियरिटी. जितनी भी बर्ड्स होती थी जो मैरिज का प्रपोजल रखती थी, वो अपनी सुपरमेसी को दिखाती थी और वाइट ईगल की प्रेज करती थी, प्रशंसा करते थे. द मेन थीम ऑफ द पोएम इज लव डज नॉट नीड एनी सुपरियरिटी. नेक्स्ट works is Aeneida and Arcite. Aeneida and Arcite is a 357 lines poem that tells the story of Aeneida. Who was Aeneida? Aeneida was the queen of Armenia and her wooing by false Arcite from the Thisbe, Greece. Thisbe was belonged to Greece. Next work is Troilus and Cressida. Friends, Troilus and Cressida and Troilus and Cressida is other works. Troilus and Cressida is written by Geoffrey Chaucer, but Troilus and Cressida is written by William Shakespeare. So, in this video, we will talk about only Troilus and Cressida. Troilus and Cressida is an epic poem written in 8,239 lines that deals with a tragic love story of Troilus and Cressida. Troilus and Cressida deals with a story of Troilus and Cressida during the siege of Troy. Troilus fell in love with Cressida, but due to Cressida's uncle Pandaria, she did not accept him. Means Cressida did not accept Troilus. In this works, Troilus was humiliated by Cressida, and also after that Cressida was much humiliated. In this work by Geoffrey Chaucer, it was composed using rhyme royal, whose source is Boccaccio's Il Frustrato and dedicated to Moral Gaur.
Troilus and Cressida was dedicated to moral Gaur, and its main source was Boccaccio's Il Frustrato. Next work is The House of Fame. The House of Fame is written in about 2005 lines, along in 3 books, and takes the form of a dream vision. It is also written in the form of dream vision and composed in octasyllabic couplets, which source was Dante's Divine Commedia. It focuses on 3 philosophies: people who do not work but want to be famous. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करना नहीं पसंद करते हैं लेकिन वो फेमस होना चाहते हैं। और सेकंड फिलॉसफी, पीपल वांट टू वर्क टू बी फेमस। कुछ ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो फेमस होने के लिए कार्य करते हैं। लेकिन जो थर्ड टाइप है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम करना पसंद करते हैं लेकिन फेमस होना पसंद नहीं करते हैं, फेमस होने के लिए काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट वर्क इज लीजेंड ऑफ गुड वुमेन. It is a poem in the form of dream vision. In this poem, Chaucer praises women because Chaucer felt guilty to humiliate women in Troilus and Cressida. Last phase was English phase. That was continued from 1484 to 1400 until the death of Chaucer. It was continued about 16 years. During English phase of Geoffrey Chaucer, first important works is An ABC to the Virgin, second The Complaint unto Pity, and third, that is most great and marvelous work is The Canterbury Tales. So now we talk about Canterbury Tales. In Canterbury Tales, there are 30 pilgrims, 29 pure pilgrims, plus one host whose name was Harry Valley. 29 plus 1 equal to 30 means total pilgrims were 30 pilgrims. It exposes the 3 types of classes of that period. First class was nobility. That example is knights, squire, and second class was ecclesiastical, which example is monk, friar, prioress, pardon, etc. And the third class was commoners, which includes cook, weavers, carpenters, clerks, etc. In Canterbury Tales, some important points are gathering place. All the 30 pilgrims were gathered in Taward Inn. Important point. Next point is they were going to tomb of Saint Thomas Becket that was situated at Canterbury. All the 30 pilgrims gathered in Taward Inn and they were going to tomb of Saint Thomas Becket, whose host was Harry Valley. Now we talk about tales. There are 24 tales, in which 20 are completed and 4 of 24 is incomplete. Total tellers means people who told stories are tales. 23 persons told the stories are tales, in which Chaucer told 2 tales. One prose, that tale was Tale of
Melville, and one in verse. That's name was Tale of Sir Thopas. Verse. There are 22 stories written in verse form, and 2 stories are written in prose form. Stories are tales that are written in prose form are Parson's Tale, and second one was Tale of Melville, that was told by Geoffrey Chaucer self. Next point is first tale and the last tale. So friends, first tale was the Knight's Tale, and the last tale was the Parson Tale. So friends, if this video is beneficial for you and you want to receive notification of this type of videos in future, please subscribe channel and also press the bell icon, like, share and subscribe. Thank you.